Hello everyone. I hope you all are good and you all are practicing problems, learning concepts. Let us for now focus on this question. And this one is really very interesting and we are going to learn something new out of it. So we must be excited. Let's start. Question कह रहा है कि calculate the amount of heat produced in the circuit shown in figure when switch is closed. So question देखने से बहुत ही सिंपल है. सिंपल बात ये है कि स्विच को आप क्लोज करो और तब बताना है what is the amount of heat getting generated. Done है. Capacitance of both the capacitor is same. That is equal to C. So basic concept जो हम यूज करते हैं वो सिंपल ये होगा. देखो यहाँ पे जब आप स्विच को क्लोज करोगे there are batteries, right? So extra or different work will get done by the battery. So overall हम ये use करते हैं work done by battery will be equal to how much. जैसे आप सिंपल भी सर्किट ले लो, जैसे ऐसा कुछ सर्किट है, ये कैपेसिटर है और यहाँ पे बैटरी है. So if this battery is supplying charge to the capacitor, work done by battery is equal to what? Energy absorbed by the capacitor. So you will be writing here energy absorbed by capacitor, ठीक है, plus heat generated. Done it? If all the work done by battery is not getting absorbed by capacitor, then rest will get released in the form of heat. Done? So this is the basic thing. और यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे इनिशियली व्हेन स्विच इज ओपन, आप देखो जब ये स्विच ओपन है उस केस में हमारा डायग्राम कैसा दिखेगा. सो आवर डायग्राम विल लुक लाइक दिस. दिस इज सी, दिस इज द बैटरी एंड दिस इज अनदर सी. डन है. सो दिस इज दिस थिंग. इसके पास कुछ इनिशियल एनर्जी होगी, इसके पास भी कुछ इनिशियल एनर्जी. जब आप स्विच को क्लोज कर दोगे तो क्या होगा, इसकी एनर्जी चेंज होगी, इसकी एनर्जी चेंज होगी. डन है. सो इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर, दैट इज 2EI. फाइनल एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर 2EF. ऐसा लिखते हैं, लिख लेते हैं. So what will be the energy absorbed by capacitor? Whatever will be this difference, right? So that is the energy absorbed by capacitor when the switch is closed. Done. And what will be the work done? So for that we need to analyze the circuit. We will see that. So this is what we are going to do. अब देखो इनिशियल एनर्जी आप निकाल लो. सो इनिशियल एनर्जी तो बहुत ही सिंपल दिख रहा है. C and C are in series. C equivalent will be C/2. So energy E initial 2 times is equal to half into C equivalent C/2 into E का square. So that is basically CE square by 4. दिस इज द इनिशियल एनर्जी, राइट. फाइनली चलो इसको देखते हैं जब आपने स्विच को क्लोज किया है. सो बैटरी इज ओवर हियर, वन बैटरी, another capacitor is this one. Switch is closed, so this battery will come into account and its polarity is like this. ठीक है. सो इट इज समथिंग लाइक दिस. अब हमें ये चेक करना होगा कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है. डन. एंड दिस इज ई, दिस इज ई. आप एक काम करो, यहाँ पे इसको पॉइंट ए ले लो. लेट्स से दिस इज बी एंड लेट्स से सी मैं नहीं लूंगी. लेट्स से दिस इज बी. ठीक है. सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 एंड C2. सो अक्रॉस C1 इट विल बी VA माइनस VB. तो VA माइनस VB आप निकालो. मैं A से B की तरफ जाऊंगी ऐसे. So if I go like this, VA plus E, in this way I'm going. So first I will encounter this battery. So negative to positive you are going. So plus E, again negative to positive plus E, and this is equal to how much? VB. So clearly you can see here B is at greater potential. So VB minus VA is equal to 2E. So across it potential difference is 2E. And what will be potential difference across C2? So again आप एक काम करो, B से P की तरफ चलो या P से B की तरफ. तो चलो VP plus E is equal to VB. So sorry, this is P. So you can clearly see here B is at higher potential than that of P. So VB minus VP is equal to E. So across it, what is the potential difference? It is your E, right? So it is your E. Final energy अगर आपको लेमन टर्म में निकालना है तो you will be writing, potential and energy stored on C1 finally will be equal to how much? Half into C into potential difference across it, that is 4E का square. डन है. एंड this plus half into C into E का square. So this will become how much? 2C square plus half. डन है. This will be 2CE square and this is half CE square. So this is your basically 5 by 2 CE का square. Okay, so this is the final energy. अगर मैं एनर्जी डिफरेंस की बात करूं, एनर्जी डिफरेंस की
I mean finally it is greater, है ना? Initially है CE square by 4, finally it is 2.5 CE square. It's greater, done it. So finally, I mean it has absorbed more energy from the battery. So 5 by 2 minus 1 by 4 CE square. This is the energy getting absorbed. This is the energy getting absorbed after you are switching on the, I mean after you're closing the switch. Simple. Done it. So this is equal to how much? This is, I mean इसको आप 2 कर लो. So this will become 9 by 4 CE square. सो हमें देखो पहला टर्म मिला है एनर्जी एब्सॉर्ब बाय कैपेसिटर. दिस इज इक्वल टू हाउ मच 9 by 4 सी स्क्वायर. नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन दिस वन, वर्क डन बाय द बैटरी. हियर यू हैव टू बी केयरफुल. ठीक है. सो इनिशियल सर्किट पे आप फिर से फोकस करो. देखो ये नेगेटिव टर्मिनल है. सो इट विल हैव नेगेटिव चार्ज, it will have positive charge, and this will have positive charge, and this will have negative charge. So upper plate of second one has negative charge, right? And here this one is negative charge. अब आप चेक कर लो स्विच को ऑन करने से क्या पोलैरिटी में चेंज हुआ है. तो देखो ये अभी भी आई मीन ए का पोटेंशियल लेस है बी से, राइट? ए का पोटेंशियल क्या है? लेस है बी से. सो दिस हैज टू बी नेगेटिव एंड दिस हैज टू बी पॉजिटिव. यहाँ आप चेक करो बी का पोटेंशियल ज्यादा है पी से. सो अब हमारा ये प्लस है एंड दिस इज माइनस. इनिशियली ये वाला प्लेट क्या था? नेगेटिव था. डन है. एंड दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट. नाउ लेट मी रीड्रॉ द बोथ सर्किट्स टुगेदर. सो सबसे पहला सर्किट देखो कैसा दिख रहा है. ये कुछ ऐसा है. पोटेंशियल को ध्यान से लिखना, गलती हो सकता है. गलती हुआ तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा. So this is negative. It has a negative charge initially. It has a positive charge initially, and it has positive charge initially. This is negative. How much charge will be there? This is E. Capacitances are equal, so equal potential drop will occur. So here E by 2, so charge is C by 2. And here also E by 2, so charge is C by 2. After closing the switch, circuit looks like what? This is the capacitor, this is C2, and here this is the battery. Done it? So this is this. Again, there is another battery, and this one is here. It is this. Then after closing the switch, we already have seen that this point is at lower potential than this point. So this is still negative and this is positive. And we have also seen that this point is at higher potential than this point. So now this is positive. Then and this is negative. Clear? And this is E and this is E. Now what is the, I mean this potential drop we have known already, right? We have calculated, that is, I mean we know already, that is how much 2e. So इस पे देखो चार्ज कितना आएगा. So that will be 2e into c. Then so this is final charge on first capacitor on C1, and final charge on C2 will be how much? Potential difference across it we have calculated, that is E. So charge is C. Now, how we will calculate work done by the battery? So for that, we need to check how much extra charge has come to both the capacitor. So let us first focus on this capacitor. अगर आप इस पे focus करते हो, initially it was having charge C by 2, and finally it is having charge 2C with polarity remaining the same, right? So charge difference, if I talk about on first capacitor, this is 2CE minus C by 2. So this will be equal to how much? 3C by 2. So this much amount of extra negative charge this plate received, and this much amount of extra positive charge this plate received. And how much work must have happened during this process? आप देखो यहाँ पे C1 को अगर आप ध्यान से देखो, it is at a potential difference of 2e, and then charge 3CE by 2 amount of charge is coming onto it. So how much work is happening? Charge into potential difference, right? So work done for sending extra 3CE by 2 charge to C1 will be equal to 3CE by 2 into potential difference, that is 2e. Why I am writing this? क्योंकि आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा होगा work done per unit charge is equal to potential difference. So this segment is receiving charge of how much? 3CE by 2. It has potential difference of 2e. So work done will be this much. And this work is getting done by the battery. डन है. सो आपको यहाँ पे ये नहीं कंफ्यूज होना है कि चलो आप ये कह दोगे कि यहाँ से चार्ज आ रहा है 3CE by 2, तो वर्क डन होगा दिस इनटू ई. नहीं, वर्क आई मीन चार्ज कहाँ जा रहा है, किस पोटेंशियल डिफरेंस से वो क्रॉस कर रहा है. सो दैट यू हैव टू चेक, दैट इज 2e. Okay, so work done will be this one, and this is going to be equal to how much? 3CE का square. So this is first work done मैं लिखती हूँ. अब second की बात करो, ये थोड़ा सा again interesting है. So second को मैं देखो यहाँ पे draw करती हूँ. ये initially it was having negative charge, it was having positive charge. ठीक है, and this was this was this is CE by 2, and finally it is what? It is plus.
ठीक है, एंड इट इज माइनस, दिस एंड इसके पास अभी चार्ज कितना है सी। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ होगा, सबसे पहले इसका नेगेटिव चार्ज डाई आउट किया होगा, डन है। सो सबसे पहले यहाँ पे कितना चार्ज आया होगा, यहाँ पे चार्ज आया होगा सी ई बाई टू प्लस सी बाई टू, जिसकी वजह से ये जीरो होगा, डन है। एंड once it will become zero, then again more positive charge of value ce will come, and then this will have c positive charge and this will have c negative charge. So overall इस ब्रांच में कितना चार्ज आ रहा है, 3c/2, डन है। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ई। तो आप वर्क डन निकालने के लिए कभी भी ऐसा मत करना 3c/2 इंटू ई, यहीं पे आप मिस्टेक कर रहे हो। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो जो यहाँ पे पहला प्लस c/2 चार्ज आया है ना, ये जब ये आ रहा है देन इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वेयर टू वेयर। इस पॉइंट का पोटेंशियल, जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया है, दिस इज this have gained something greater potential, right? So charge यहाँ से चल के इस प्लेट तक आ रहा है, so charge is traveling from positive potential to negative potential, दिस c/2 चार्ज, डन है। सो चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे बैटरी को वर्क करना पड़ेगा क्या, c/2 चार्ज को सेंड करने में, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो अगर आपको बॉल को ऊपर से नीचे गिराना है, आपको एफर्ट करना है क्या, यू जस्ट हैव टू रिलीज इट, डन है। ग्रेविटी विल अट्रैक्ट इट, डन है। वहां पे कुछ भी वर्क नहीं करना, क्योंकि ये देखो ग्रेटर हाइट से लोअर हाइट की तरफ आ रहा है, यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आ रहा है। सो इन दिस केस यू डोंट नीड टू डू वर्क, रादर इट विल गेन एनर्जी, डन है। सो इस प्रोसेस में तुम्हारा बैटरी कुछ भी वर्क, बैटरी पॉजिटिव वर्क नहीं करेगा, डन है। एफर्टलेसली इट विल कम हियर, एंड इन दिस प्रोसेस एक्स्ट्रा वर्क इज गेटिंग डन ऑन द बैटरी, नॉट बाय द बैटरी, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो सी ई बाई टू इन टू potential difference is how much e, so this much amount of work has happened on the battery while this c by 2 charge has accumulated on this and this plate, nullifying it basically, done है। so this is work done on the battery, and rest जब ये जीरो हो चुका है, now this is zero and now you don't need to nullify it, ठीक है। so now charge will flow from this to this, this will come to this plate and it will come to this plate from this side, so now normal thing will happen, डन है। अब तुम्हारा नॉर्मल थिंग जाएगा, सो वर्क डन आप निकाल लो, वर्क डन आप अब क्या लिखोगे, रेस्ट, c/2 के लिए हमने किया रेस्ट, हाउ मच, हाउ मच इज द रेस्ट, so 3c/2, that is c, right? So work done will be equal to how much, ce into e, that is your ce square, work done by the battery, okay? So overall how much value you're going to get, work done by the battery, यहाँ पे क्या लिखोगे, work done by the battery, so this will be equal to uh, I mean okay, this will be ce square minus ce square by 2. So this is equal to ce square by 2. So total work done by the battery आप लिख लो, this is W1, this is your W2, डन है। So W1 तुम्हारा कितना आया है, 3ce square. So W will be equal to 3ce square plus ce square by 2. So this will become 7ce square by 2. Okay, so this is this one. अब आप यहाँ पे let us put it back to the original formula जो कि हमें मिला था, ठीक है। so हमें ओरिजिनली हमने क्या डाला था, this one, let us put it here. So this is 7ce square by 2 and this is equal to 9/4ce square plus h. So h का वैल्यू क्या है देखो, this will become 14/4 ce square minus 9/4 ce square. So this will be equal to how much, 5/4 ce square, डन है। सो दिस विल बी योर आंसर। सो आंसर क्या आ रहा है, 5/4 ce square, डन है। तुम्हें लूप होल कहाँ था, तुम्हें बस ये चेक करना था कि जब पहला जो c/2 अमाउंट ऑफ चार्ज इस प्लेट पे आ रहा है विच इज नलिफाइंग दिस चार्ज बेसिकली, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है उसको नलिफाई कर रहा है, सो दैट इज एफर्टलेसली फॉलिंग यू कैन से। और उसके बाद ये प्लेट जो है वो जीरो पर है, डन है। सो अगर अगर तुम यहाँ पे ये भी सोच सकते हो कि मैम आपने बोला हाई से लो की तरफ जा रहा है इसलिए वर्क डन ऑन द बैटरी हो रहा
है ना? मैंने ये बोला। तो आप ये भी कह सकते हो कि जब ये प्लेट का पोटेंशियल 0 हो गया है, तो भी तो ये पॉइंट पॉज़िटिव पे है, तब भी नहीं होना चाहिए। बट अगेन माइंड इट, ये सारी चीज़ें फ्रैक्शन ऑफ टाइम में हो रहा है, ठीक है? सो बेसिकली मैं वो वाली चीज़ भी क्लियर कर दूँ। देखो यहाँ पे जैसे ये वाला चीज़ था, ऐसा, ये बैटरी था, ठीक है? ये यहाँ पे किससे कनेक्ट हुआ है? स्विच के ऑन करने से इस बैटरी से कनेक्ट हुआ है, ठीक है? सो यहाँ पे इसको ऐसे करो, ठीक है? अब देखो ये प्लेट सडनली पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, हाई पोटेंशियल से। सो जो भी चार्ज जा रहा है हाई से लो जा रहा है, ठीक है? इसके पास नेगेटिव था। जैसे ही ये 0 हो जाएगा ना, इस पे 0 चार्ज हो गया, इस पे 0 हो गया। अब ये नॉर्मल केस है, जहाँ पे तुम्हें हाई टू लो नहीं भेजना है, सिंपली आई मीन बैटरी हैज़ टू डेवलप पोटेंशियल हियर। ठीक है? सो यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल बिल्डअप होगा एंड दैट डिफरेंस ई यू वर गेटिंग आफ्टर द कैलकुलेशन। सो हम लोग जो भी चीज़ कैलकुलेट करते हैं वो स्टेडी स्टेट में कर रहे हैं जब सब कुछ सेटअप हो चुका है। डन है? बट डीप डाउन इफ यू गो, सब चीज़ टाइम लेता है चीज़ें डेवलप होने में, राइट? सो कुछ ऐसा हुआ होगा। डन है? सो इनिशियली आप ऐसा सोचोगे ना कि जब इसके पास, आप इस तरह से भी सोच सकते हो कि यहाँ पे इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। सो ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव टर्मिनल अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है? ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है? सो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी कि बैटरी के ऊपर वर्क हो रहा है, ठीक है? इसको बहुत तरह से देख सकते हो। सो सिंपली यू हैव टू कीप इन माइंड कि जब चार्ज नलिफाई हो रहा है, such sort of scenario is there. Done. I hope this question is clear and I hope you are able to add one layer to this one. But if you have any doubt anywhere, you can always let me know in the comment section. Thank you. Take care of yourself. Bye bye.